We all will welcome the Honorable Minister with a huge round of applause. आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी जब पधारे हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आपसे निवेदन है कृपया इधर उधर ना जाएं, अपने ही स्थान पर रहें to maintain the dignity and the gravity of the event. हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं माननीय श्री R.K. सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है माननीय, आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबका उत्साहवर्धन कर रही है। माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज, रिस्पेक्टेड श्री आलोक कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री विवेक कुमार देवांगन का और श्री अभय बाकरे, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आप सभी का स्वागत है। वी ऑल्सो एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, MNRE, and also CMDs and directors and head of PSUs and organizations. We all welcome distinguished delegates who have joined us from different parts of the country. माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए न्यौछावर होने का सौभाग्य भले ही न प्राप्त हुआ हो, पर हम देश के लिए मरकर नहीं तो जीकर तो दिखा सकते हैं। BEE भी भारत की सेवा में रत है, एनर्जी एफिशिएंसी तथा कंजर्वेशन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिए लाइट टावर की तरह जागरूकता की रोशनी जगमगा रहा है BEE, ताकि हम हमारे बहुमूल्य साधनों को प्रिजर्व कर सकें, जलवायु परिवर्तन को बचाने की विश्व मुहिम तथा सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करने का न्यू इंडिया का प्रण सुदृढ़ कर सकें, उसे साकार कर सकें। आइए हम सब प्रण करते हैं कि हर जन एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा। ऊर्जा सृष्टि की रचना का स्रोत, ऊर्जा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज। घर, अस्पताल, उद्योग, कार्यालय, यातायात, हम सभी किसी न किसी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर हैं। ऊर्जा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन क्या हम इस वरदान का महत्व समझ पाए हैं? क्या हम ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं? जरा सोचकर देखिए, क्या हो जब 135 करोड़ देशवासी मिलकर ऊर्जा बचाएं और आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश को आत्मनिर्भर व ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। तो चलिए रोज थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचाते हैं और देश के कोने कोने तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमारा प्रण ऊर्जा संरक्षण। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। मे आई नाउ इनवाइट श्री विवेक कुमार देवांगन, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, टू काइंडली डिलीवर वेलकम एड्रेस। The National Energy Conservation Day is celebrated on 14 December every year since 1991. On the occasion of 31st National Energy Conservation today, I have the privilege to welcome Honorable Minister
for Power, New and Renewable Energy, Shri R.K. Singh ji, who has led from the front in making India as the only country among the G20 nations who has been able to achieve its energy conservation and energy efficiency goals as committed in the Paris Agreement. It's my honor to welcome Shri Krishnapal ji, Honorable Minister of State for Power and Heavy Industries, who has been guiding us how to electrify our economy and vigorously following electric vehicle ecosystem in the country, as he is also looking after the Ministry of Heavy Industries. I would like to welcome Secretary Power Shri Alok Kumar ji, who has really brought a paradigm shift in the approach of Ministry of Power to steer the agenda of energy transition, including a number of path-breaking initiatives to meet our enhanced commitments given at Glasgow during 26th Conference of Parties. I welcome my colleague on the dais, Shri Abhay Bakre ji, Director General of Bureau of Energy Efficiency, all the dignitaries, all the CMDs from various PSUs, all the officials from Ministry of Power, all the distinguished guests from state governments, from the industries, awardees and media personnel who are present here. I am extremely delighted to welcome all of you on this auspicious day of National Energy Conservation Awards 2021, where we give national recognition through awards to innovative ideas, industries and establishments who have taken special efforts to reduce energy consumption while maintaining their production. I would like to congratulate the award winners from industries, building sector, manufacturers of B Star labeled appliances and other establishments for their exemplary efforts in the field of energy conservation and energy efficiency. We take particular pride in congratulating school children who, despite these challenging times, have participated in the painting competition and depicted their imaginative and creative thoughts through the beautiful paintings. Bureau of Energy Efficiency has spearheaded the country's initiatives for horizontal and vertical percolation of energy efficiency on various levels in India. Several innovative energy efficiency mechanisms and national programs have been successfully designed and implemented, like the Perform, Achieve and Trade, that is PAT scheme, Standard and Labeling Program for energy efficient appliances, Ujala for households, Street Lighting National Program, Energy Conservation Building Code, etc. As on November 21, these endeavors have resulted in total energy savings of about 29.28 million ton of oil equivalent, that is about 3.15% of total primary energy supply of the country. I would like to acknowledge the contribution of all bilateral and multilateral partners of Bureau of Energy Efficiency, energy auditors, industry associations, building professionals, energy-intensive industries and establishments, manufacturers of energy-efficient appliances, among others, towards facilitating in achieving such huge energy savings. On the occasion of National Energy Conservation Day 2021, Convergence Energy Services Limited, a wholly owned subsidiary of Energy Efficiency Services Limited, will be expanding their flagship Gram Ujala program. Under this initiative, I am happy to announce that a total of 1 million LEDs bulbs are being distributed today across 2,579 villages in 5 states, Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka. This is likely to result in energy saving of about 141 million units with a cost saving about 56.58 crore and annual carbon dioxide emission reduction of about 1.538 million tons. I would also like to mention that today we shall be releasing net zero building, that is Shunya rating plan on voluntary basis, guidebook on awareness generation on energy efficient buildings and thermal comforts, and Cloud is data analytical tools for small and micro enterprises. All of us will have to join hands and work in unison so as to make India an energy efficient economy and society.
We need to make conscious efforts to embrace energy efficient practices and products in our homes, offices and industries. I once again welcome all of you on the occasion of National Energy Conservation Day. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और अब BEE एनर्जी एफिशिएंसी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई इबारत जोड़ने जा रहा है, नई नई सौगातों की शुरुआत आज होने जा रही है। हम माननीय मंत्री श्री RK सिंह जी से विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया हाई एनर्जी लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक्स एंड सिस्टम के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय। आपसे निवेदन है, कृपया यात्री कार, लाइट, मीडियम, कमर्शियल तथा हेवी ड्यूटी वाहनों के टायर्स की स्टार रेटिंग का भी शुभारंभ करें। It is expected to save 2.27 MMT HSD and 1.04 MMT petrol annually and reduction of approximately 10.1 MMT. माननीय, अब कृपया प्रमोटिंग नेट जीरो बिल्डिंग शून्य रेटिंग प्लान को भी लॉन्च करें। शून्य लेबलिंग प्रोग्राम विल encourage the building owners and promoters to make energy efficient buildings. तो आइए देख लेते हैं कि ये शून्य रेटिंग आखिर है क्या, एक छोटी सी फिल्म के द्वारा। शून्य, भारत के महान ज्योतिष व गणितज्ञ आर्यभट्ट की सोच, जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक बहुमूल्य खोज है। और इसी मूल्यवान शून्य से हम भारत की ऊर्जा दक्षता में विशेष योगदान दे रहे हैं। आज विश्व भर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें गतिशील रहने के लिए हमें ऊर्जा दक्ष होने की आवश्यकता है। विद्युत मंत्रालय और BEE ने कमर्शियल बिल्डिंग स्टार रेटिंग योजना की शुरुआत की, जिसमें 5 स्टार लेबल वाली इमारतों को सबसे कुशल माना जाता है। इस योजना को बल देने के लिए शून्य लेबलिंग कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसमें हम ऊर्जा दक्ष डिजाइन और पैसिव फीचर्स के साथ ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों को अपनाते हुए शून्य लेबल यानी नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग और शून्य पॉजिटिव यानी नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत निरंतर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने हेतु प्रयासरत हैं। भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में वे परिसर आते हैं जो अपनी जरूरत भर की बिजली उत्पादन करते हैं, और नेट जीरो पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग अपनी जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन करते हैं। वर्तमान में 100 कमर्शियल बिल्डिंग्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मदद से इन नेट जीरो कार्यक्रमों के अंतर्गत शून्य ऊर्जा बिल्डिंग बन रही हैं और भविष्य में इन्हें पर्यटन स्थलों और स्मार्ट सिटीज में भी लागू किया जाएगा। तो आइए हम भी इस अनोखे व सराहनीय शून्य लेबल कार्यक्रम को अपनाएं, देश के विकास में सहभागी और समाज के लिए आदर्श बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां ऊर्जा दक्ष और ऊर्जा निर्भर देश का उज्जवल भविष्य हो। BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमारा प्रण ऊर्जा संरक्षण। Sir, may I now request you to kind of release the guidebook on awareness generation on energy efficient buildings and thermal comfort.
This will be a reference document to media persons and journalists to help them report responsibly on the issue of energy efficient in buildings. It will cover information on the design of energy efficient buildings, key features, important national, international policies, etc. माननीय, अब हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिकल टूल्स फॉर एसएमईज को भी लॉन्च करें अपने कर कमलों द्वारा. This tool has been designed to bring awareness and identify energy efficiency gaps and track the monitoring of key operating indicators. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और आप देशवासियों को बहुत बहुत बधाई इन सौगातों के लिए. और अब हमारा आग्रह है रिस्पेक्टेड श्री आलोक कुमार, सेक्रेटरी पावर, आपसे कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें. ऑनरेबल यूनियन पावर मिनिस्टर श्री आर.के. सिंह साहब, Honorable Shri Krishnapal ji, our respected Minister of State for Power and Heavy Industries, Chairperson CEA, Director General Bureau of Energy Efficiency, CMDs of our CPSCs, all our senior officers from Ministry of Power and other ministries, all the award winners, dear guests and all participants, our media friends. Let me first extend my heartiest congratulations to all the award winners on this occasion. Today is a very special Energy Conservation Day. We are also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a special celebration which will run for 2 years and to showcase what we have achieved in the last 75 years and also to plan and aspire what we are going to achieve when we turn 100 years of independence in 2047. So along with all other Government of India ministries, state governments, Ministry of Power is also celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is a very special occasion for Ministry of Power. That this week has been is a major event in which several events are taking place all across India, in villages, in hills, in cities, in schools. We are very proud of it. We are now talking of two things, the energy growth and energy transition simultaneously. The other countries who are talking of energy transition, they have almost reaching saturation in their energy consumption. But India has a very challenging task. That while we have to meet our growing needs, we also have to showcase and execute the energy transition we have planned. India has both major goals before it. Our electricity demand, which has just touched 200 gigawatt, will cross more than 340 gigawatt in a decade. Our installed capacity for electricity generation, which is now currently 392 gigawatt, will touch around 817 gigawatt in 10 years. We are generating around 1500 billion units every year, whereas we will be generating more than 2500 billion units by 2030. So this is only sector of electricity, but all our energy needs will also grow in the economy.
So while we grow and we meet our energy demands, which is a rightful claim for India, we also have a challenge to meet energy transition that we grow responsibly. Under the able guidance of our Honorable Prime Minister and ably being led by our Union Minister Shri R.K. Singh ji, India has come out with flying colors. When we talk before the global community, India has done exceedingly well in terms of energy transition. And see, most of the savings in terms of the carbon dioxide emissions have happened because of two initiatives: the energy conservation and renewable energy. And both these initiatives are being led by Shri R.K. Singh ji. He heads both the ministries, so most of the efforts in being made in terms of energy transition in India are being led by Shri R.K. Singh ji. And we are very fortunate that we are working with him and we are part of this story, this journey. India has successfully achieved much before time almost all its commitments which we made in COP21. The emission intensity which we were to reduce by 33% by 2030, we are already closing around 28%. And non-fossil fuel based installed capacity, which was supposed to be 40% by 2030, is already touching around close to 38-39%. And our non-fossil fuel based capacity is now more than 40%. Our Honorable Prime Minister has made even more challenging announcements recently in COP26. And again, in the Ministry of Power, we have been given two tasks to achieve. That is, emission intensity has to go down by 45% by 2030 as compared to 2005 levels. So not only 33%, we have to go down by 45%. And we have to avoid 1 billion tons of carbon dioxide in 10 years. So both these tasks are in fact challenging, but we are committed to achieve these tasks. So far, Bureau of Energy Efficiency has done an outstanding task in energy conservation, and I am informed that the mitigation in energy sector, half of it India has achieved through energy conservation. It's a great achievement. About 40 to 45% of the commercial energy is consumed by industries. So in that context, the iconic program of the Perform, Achieve and Trade, PAT program, is the flagship program of Bureau of Energy Efficiency, which covers now more than 1,000 designated consumers, and it has saved more than 22 million tons oil equivalent. Similarly, standard and labeling program, every household uses appliances, every industry uses appliances. So the efforts have resulted into 65 billion units of electricity saving because of the standard and labeling program. We have just now launched 2 more, the batteries and tires. The journey is continuing. In the LED sector, it's a spectacular success before the world. We have distributed more than 200 crore LED bulbs, and we have installed about 1.2 crore LED lights, and we are still not satisfied. We are working continuously. Going further, our new initiatives are penetration of electric mobility. We have launched Go Electric campaign. In the new program of Roshni, which we are going to launch for achieving the energy efficiency next decade, helping and facilitating MSMEs in energy efficiency will be the key intervention. We have laid very good foundation by taking up number of clusters, and we are going to now scale up. Similarly, India is going to urbanize very rapidly in next 10-15 years, so it's a time to also catch up on residential sector of buildings, large group housing complexes. So those are 3 key areas. I would like to speak about, for a few seconds, about Gram Ujala, which was launched by our Honorable Minister in Varanasi and Ara around 4 or 5 months ago. It was a very important beginning, but this program has now been scaled up.
India is going to distribute more than 1 crore bulbs in next about 2 months in the rural areas of India. Earlier, whole of the LED distribution was focused, it was in the urban areas. It's a very unique scheme in which a bulb is given for only 10 rupees, which costs around 100 rupees. It's a good quality bulb. And balance cost is to be recovered through carbon credits. So it goes to heads off to the Energy Efficient Services Limited and that's RMCSL. They have designed this program and it has been now scaled up. It will see huge energy savings in rural households. Bureau of Energy Efficiency has taken several steps for awareness creation, capacity building. All of these achievements which we are seeing today, it is a result of sustained hard work over years by BE, by creating awareness and by building capacities in architects, in designers, in industries. So they have done a wonderful work which they will continue, I am very sure. The present award ceremony is also one of the element of those efforts because it creates a lot of awareness and it creates a spirit of competition. So more than 400 applications were received, out of which these selected ones will be awarded today. One last thing before I close is the one very new thing which we have initiated this year is the awards for innovation. So established industries, they take energy efficiency for commercial reasons and they compete and they achieve. It's a good thing. But a lot of youngsters, researchers, a lot of startups, a lot of our spirited scientists and professors, they are working for a lot of innovation in energy efficiency. So this year Ministry of Power will be felicitating those innovators who have been selected. My best wishes to them. Once again, my congratulations to all the award winners. And let us celebrate this Energy Conservation Day and Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव गर्व के साथ मना रहा है और आज विद्युत मंत्रालय एक ही दिन में 10 लाख एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने का पुण्य कार्य कर रहा है। हम आपको बता दें कि मंत्रालय ने मार्च में ही ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया था। ग्रामीण घरों में रोशनी बिखराने वाली इसी योजना की ही एक कड़ी है आज की ये पहल। लेकिन इसके पहले कि माननीय मंत्री जी इसे लॉन्च करें, कुछ और भी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि CESL 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में 2500 से ज्यादा गांवों में 2 लाख ग्रामीण घरों को आज रोशन कर रहा है। मानिए कुछ संदेश हैं जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। आपसे निवेदन है, अभी कुछ 2 संदेश जो हैं वो माननीय मंत्रीगण के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे माननीय श्री ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का संदेश। तो पहले 2 संदेश सुन लेते हैं, उसके बाद आपके कर कमलों द्वारा ये शुभ कार्य किया जाएगा। देखिए, ऊर्जा की खपत को कम से कम करने से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए एलईडी बल्ब के माध्यम से ऊर्जा की खपत में कमी आती है, जिससे परिवार के लोगों को ऊर्जा के उपयोग करने में बचत भी होती है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन के में भी लाभ मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी तक 17 लाख एलईडी बल्ब जो है बिहार में बंटवारा हो चुका है। आगे आने वाले वक्त में और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कुछ 8-10 शहरों में इसका वितरण व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में बिहार के हर घर में एलईडी बल्ब लगे, यही कल्पना है, यही तमन्ना है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए कल जो दिवस है विद्युत खपत कम करने का दिवस 14 तारीख को रोज एक कार्यक्रम होगा। मैं उसकी शुभकामना देता हूं और ESL कंपनी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम में बड़ी तत्परता दिखाई, आगे भी तत्परता दिखाएंगे। धन्यवाद। और आइए अब हम माननीय श्री V सुनील कुमार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का संदेश सुनते हैं। ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ದಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಆಶಯವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಇರಾದೆ. ಒಟ್ಟು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಧನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. तो अभी हमने 2 संदेश सुने और अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री आर के सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आपसे कि ग्राम उजाला डैशबोर्ड का शुभारंभ करके 10 लाख LED बल्ब को सिर्फ एक ही दिन में डिस्ट्रीब्यूट करें. अभी ये 9,32,798 डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं LED बल्ब, 9,32,798 और ये 6 बजे तक शाम को चलेगा, तब तक ये चलेगा, तब तक सारे बल्ब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. यानी हमें फख्र है, हमारे प्यारे ग्रामवासी अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंट और अफोर्डेबल प्रकाश से अब जगमगाएंगे. उम्मीद की साख, हर घर प्रकाश. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब हमारा विनम्र आग्रह है, अनुनय है माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज, आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमें शुभकामनाएं दें. आदरणीय मंत्री श्री आर के सिंह जी, विद्युत सचिव श्री आलोक कुमार जी, अपर सचिव श्री विवेक देवांगन जी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री अभय भाकरे जी, विभिन्न विभागों के गणमान्य सदस्य और उद्योग जगत के हितधारकों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं इस वर्ष के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हूँ. मुझे लगता है कि यह ऊर्जा संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है. यह पुरस्कार सही मायने में मान्यता देने और अब आपके दृढ़ प्रयासों के प्रति कृतज्ञता और आभार जताने का प्रतीक है. दूसरे, आप समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं और देश में दूसरे लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊर्जा वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे आवश्यक हिस्सा है. जब से हम औद्योगिक क्रांति से आगे बढ़े हैं, उद्योगों, बिजली, परिवहन क्षेत्रों के लिए जीवाश्म आधारित ईंधन हमारे ऊर्जा स्रोत थे. वह युग उपलब्ध संसाधनों, प्रौद्योगिकी और मानव जनित गतिविधियों की भागीदारी के साथ विकसित हुआ था. आज हम अगली पीढ़ी की तकनीकों और सेवाओं के साथ सबसे उन्नत युग में रह रहे हैं. हमारे पास अनेक प्रकार की कुशल प्रौद्योगिकी है, समर्थ ऊर्जा विकल्प है और हमें सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी है. सबसे खराब पहलू की बात करें तो देश में आज भी जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का वर्चस्व है. यही वजह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई
मानव जनित गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। विद्युत राज्य मंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि हमें हरित और प्राकृतिक संसाधनों से बिजली और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा गया है। मेरा यह भी अनुभव है कि माननीय श्री आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की समग्र स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमारे विभाग ने जिम्मेदारी पूर्वक सराहनीय कार्य किया है, जैसे बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार, ऊर्जा की कमी को पूरा करना, पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात करना, ग्रिड ट्रांसमिशन दूरी का विस्तार, एक ग्रिड और एक राष्ट्र नीति, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी को बिजली के लिए राज्य स्तरीय रूपरेखा। जलवायु समझौते के तहत भारत का उत्सर्जन प्रदर्शन 2030 तक 35% कमी के लक्ष्य की तुलना में 2005 के स्तर से 28% कम हो गया है। हमने अपनी प्रतिज्ञा और वादे को बरकरार रखा है। हालांकि हमने अपने जलवायु समझौते में बेहतर प्रदर्शन किया है, फिर भी हमारे सामने बिजली उत्पादन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गुणवत्तापूर्वक संसाधनों को प्राप्त करने में काफ़ी चुनौतियां हैं। नई तकनीकों, नई खोजों को अपनाना काफ़ी महंगा है और इसे अपनाने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान तौर तरीकों को और बेहतर बनाएं और उचित ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाएं, ताकि भारत हरित और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। जैसे जैसे हमारा राष्ट्र नई ऊर्जा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, हमें अपने आर्थिक क्षेत्रों को उचित और उपयुक्त रूप से अपनाने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को बधाई देता हूं, जो हमारे मंत्रालय की शाखा है तथा सभी आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए नीतिगत गतिविधियों और कार्यक्रमों को लागू करती है, चाहे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए लेबलिंग कार्यक्रम हो, बड़े उद्योगों के लिए निष्पादन प्राप्ति और व्यापार तंत्र हो, भवन क्षेत्रों के लिए ECBC कोड का विकास हो, या SME को मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करना हो। BEE द्वारा विकसित मॉडल सराहनीय हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा का संरक्षण राष्ट्र के हित में है और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम में से प्रत्येक को ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की भूमिका निभानी होगी। ऊर्जा का संरक्षण एक तरह से ऊर्जा का उत्पादन है। जितनी ऊर्जा की हम बचत करते हैं, समझिए उतनी ऊर्जा का हमने उत्पादन कर लिया है। अंत में मैं माननीय श्री आर.के. सिंह जी को इस अवसर पर सभी मंत्री स्तरीय पहलों में उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्रालय और BEE के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मिशन और ऊर्जा दक्ष भारत बनाने के प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं, प्रतिभागियों और बच्चों को बधाई देता हूं। मैं आप सभी को नव वर्ष 2022 की भी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी। अब उन्हें सलाम जिन्होंने स्थापित किए हैं एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन के नए नए सोपान। 5 कैटेगरीज, 25 सेक्टर, 408 एप्लीकेंट्स, 3034 मिलियन यूनिट्स, एनर्जी की बचत यानी 2.52 मिलियन टन्स ऑफ GHG एमिशन रिडक्शन यानी 1517 करोड़ रुपए की बचत। 15 यूनिट्स को प्रथम पुरस्कार दिए जा रहे हैं, 12 यूनिट्स को द्वितीय पुरस्कार और 19 को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा। अब हमारा निवेदन है माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी और माननीय राज्य मंत्री जी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आपसे कि कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। अब बारी है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स की। माननीय मंत्री जी मंच के सामने पधार रहे हैं। जोरदार तालियां। In industry category, under sector cement, the first prize is being awarded to Dalmia Cement Bharat Limited Unit, Kapilas Manufacturing Works, Cuttack, Orissa. Unit has achieved thermal energy saving of
63,840 million kilocals and electrical energy saving of 4.79 million units. And the award is received by Shri Ram Avatar Sarma, Unit Head, and Shri Ahmer Ali Khan, Energy Manager. The second prize is being awarded to Sagar Cements Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Unit has achieved thermal energy saving of 15,960 million kilocals and electrical energy saving of 1.83 million units. The award is received by Shri Katta Ganesh, Group President, and Shri MM Ganesh, Energy Manager. There are 2 units who have received certificate of merit under this sector. JK Cement Works, Mudhol, Karnataka. The certificate is received by Dr. Singhania, Managing Director, and Shri Rajneesh Kapoor, Chief Operating Officer. Dalmia Cement Bharat Limited, Kadapa, Andhra Pradesh. The certificate is received by Shri Ganesh Vaman Rao and National Manufacturing Head, and Shri K. Karunakara Rao, Deputy Executive Director. Under sector drug and pharmaceutical, the first prize is being awarded to Shri Mohta Ayurvedic Rasayan Shala, Bikaner, Rajasthan. This unit has achieved thermal energy saving of 84 million kilocals and electrical energy saving of 39,200 units. The award is received by Shri Mohan Singh Fagheria, Principal Technical Advisor, and Shri Rajendra Kumar Garg, Production Manager. Second prize is being awarded to Cipla Limited, Solan, Himachal Pradesh. The unit has achieved thermal energy saving of 329 million kilocalories and electrical energy saving of 1.79 million units. The award is received by Shri Ravi Mulchandani, Global Engineering and Project Head, and Shri Atul Avasthi, Energy Manager. Under the same sector, certificate of merit is received by 1 unit, which is Dr. Reddy's Laboratories Limited, Sri Kakulam, Andhra Pradesh. The certificate is received by Shri Srinivasa Reddy, Site Head, and Shri Sandeep Kumar Kurmi, Site Lead. Under sector food processing, the first prize goes to Surat District Cooperative Milk Producers Unit Limited, Surat, Gujarat. The unit has achieved thermal energy saving of 583 million kilocals and electrical energy saving of 5.18 million units, and the award is received by Shri Man Singh Kalyanji Patel, Chairman, and Shri Dr. Pradeep J. Patel, Energy Manager. Under the same sector, certificate of merit is received by 1 unit, which is Marico Limited, Puducherry. The certificate is received by Shri Ravindra Gopal Chopade, Works Head, and Shri Anto Jeshant P, Production Executive. Under section iron, the first prize goes to Visa Steel Limited, Jajpur, Orissa. The unit has achieved thermal energy saving of 1,27,540 million kilocals and electrical energy saving of 12.91 million units. And the award is received by Shri Manoj Kumar, Director and COO. Under the same section, the sector iron, certificate of merit is received by 1 unit, which is Deldeep Ispat and Alloy Private Limited, Dhar, Madhya Pradesh. पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं श्री दिनेश भारती जी, CGM Electrical, and Shri OP Malviya, CGM. Under sector paper and pulp,
फर्स्ट प्राइज गोज टू इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड बालेश्वर उड़ीसा। इसने थर्मल एनर्जी बचाई है 1,27,754 मिलियन किलो कैल्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचाई है 12.30 मिलियन यूनिट्स। अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं श्री आशीष अविनाश गुप्ता, यूनिट हेड, एंड श्री सुशील कुमार खेतान, डायरेक्टर। Under sector plastic, first prize goes to Marelli Motherson Automotive Lighting India Private Limited, Pune, Maharashtra. इसने थर्मल एनर्जी बचाई है 283 मिलियन किलो कैल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग 1.88 मिलियन यूनिट्स। अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं श्री संजय मेहता, डायरेक्टर, एंड श्री साहिब राव भोसले, एनर्जी मैनेजर। Second prize is being awarded to Subrose Limited, Gurugram, Haryana. इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग की है 2.70 मिलियन यूनिट। बारी आती है सेकंड प्राइज विनर की, सबरोज लिमिटेड, गुड़गावा, हरियाणा, 2.70 मिलियन यूनिट्स की बचत। और अवार्ड को ले रहे हैं श्री CS तिवारी, यूनिट हेड, एंड श्री पंकज निर्वार, एनर्जी मैनेजर। Under the same sector, certificate of merit is received by one unit, which is Titan Company Limited, Eye Care Division, Chikkaballapur, Karnataka. The certificate is received by Shri R. Robin Anthony, Manager Maintenance, and Shri G. Nath, PS Manager Production. Srijit PS. Under sector tire, the first prize goes to JK Tire and Industries Limited, Kanchipuram, Tamil Nadu. इसने थर्मल एनर्जी 28,314 मिलियन किलो कैल्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग ऑफ 2.04 मिलियन यूनिट्स बचाई है। अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं श्री विनय कृष्ण, वाइस प्रेसिडेंट वर्क्स, एंड श्री SK सतपति, हेड इंजीनियरिंग। Second prize is being awarded to JK Tire and Industries Limited, Rajsamand, Rajasthan. This unit has achieved thermal energy saving of 25,243 million kilocals and electrical energy saving of 1.06 million units. Award is received by Shri Radhashyam Kedia, Vice President Works, and Shri Devendra Singh Sirvi, GM Engineering. Under the same category, certificate of merit is received by one unit, which is Balakrishna Industries Limited, Alwar, Rajasthan. Certificate is received by Shri Sandeep Singh, unit head, and Shri Rajesh Kumar Agarwal, general manager. अब हम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की ओर चल रहे हैं। अंडर जोनल रेलवे सेक्टर, First prize goes to North Eastern Railway, Gorakhpur, Uttar Pradesh. This unit has achieved thermal energy saving of 10,28,741 million kilocalories and electrical energy saving of 25.32 million units. This award is received by AK Shukla, PCEE, and Shri Satish Jaiswal, SSE. सेकेंड प्राइज जा रहा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को। इसने थर्मल एनर्जी 71,223 मिलियन किलो कैलोरीज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचाई है 380.96 मिलियन यूनिट्स। और अवार्ड को ले रहे हैं श्री प्रमोद कुमार, जनरल मैनेजर, श्री सतीश कोठारी, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। दो यूनिट्स हैं जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जा रहा है। साउथ वेस्टर्न रेलवे, हुबली, कर्नाटका। द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय श्री मनोज महाजन, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को भी सर्टिफिकेट मिल रहा है और ये सर्टिफिकेट रिसीव कर रहे हैं श्री अमिताभ निगम, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और श्री योगेश परतेती, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बारी आती है मेट्रो रेलवेज की। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इज रिसीव्ड बाय वन यूनिट
और ये यूनिट है लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सर्टिफिकेट को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं श्री विकास कुमार दुबे, JGM, सुशील कुमार, डायरेक्टर। और अब हम चल रहे हैं बिल्डिंग कैटेगरी की ओर। अंडर सेक्टर होटल्स, फर्स्ट प्राइज गोज टू द रेसिडेंसी टावर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। दिस यूनिट has achieved electrical energy saving of 1.11 million units. Award is received by Shri B. Gopinath, Chief Operating Officer, and Shri S. Karthikeyan, Group Chief Engineer. दूसरे पुरस्कार के हकदार रहे ट्राइडेंट गुड़गावा, गुरुग्राम, हरियाणा। अवार्ड इज रिसीव्ड बाय श्री अमित खरे, जनरल मैनेजर, एंड श्री नमीश शेट्टी, चीफ इंजीनियर। तीन यूनिट्स हैं जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जा रहा है होटल सेक्टर में, विच आर ताज पैलेस होटल, न्यू दिल्ली। सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय श्री यश शर्मा, डिप्टी चीफ इंजीनियर। ITC ग्रैंड चोला, चेन्नई, तमिलनाडु, और ITC लिमिटेड, ITC गार्डेनिया, बेंगलुरु, कर्नाटका के लिए एक ही पर्सन है जो रिसीव कर रहे हैं, श्री रविंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर। Under hospitals, first prize goes to Railway Hospital, Krishna, Andhra Pradesh. Unit has achieved electrical energy saving of 0.17 million units. Award is received by Shri Somesh Kumar, Principal Chief Electrical Engineer, Shri K. Thoria, Chief Electrical Loco Engineer and Energy Auditor. सेकेंड प्राइज के हकदार रहे डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल, राजकोट, गुजरात। इसने बचाया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग ऑफ 0.14 मिलियन यूनिट्स। अवार्ड इज रिसीव्ड बाय श्री GS बाबरिया, PCEE, एंड श्री तेजस मेहता, JE। दो यूनिट्स हैं जिन्हें मेरिट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। रेलवे हॉस्पिटल, इरोड, तमिलनाडु। सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय श्री राजेश कुमार मेहता, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। Divisional Railway Hospital, Kalyan, Maharashtra. Certificate is received by Shri Harmeet Singh Sood, Senior Divisional Electrical Engineer, and Shri Salab Goyal, Divisional Railway Manager. और अब बारी आती है
शॉपिंग मॉल्स की और प्लाजा की। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इज रिसीव्ड बाय 1 यूनिट विच इज गौर सेंट्रल मॉल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अक्षत सक्सेना, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, रिसीविंग द अवार्ड। चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इज रिसीव्ड बाय 1 यूनिट विच इज GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना। द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय श्री प्रतीश शंकर वाजे, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड, एंड श्री रवि NC, हेड, टर्मिनल इलेक्ट्रिकल। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी शुभकामनाएं हैं जो इनके साथ जाएंगी। और अब इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी की ओर मुड़ रहे हैं। अंडर सेक्टर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, फर्स्ट प्राइज गोज टू काचेगुड़ा हेरिटेज बिल्डिंग, हैदराबाद, तेलंगाना। दिस यूनिट हैज अचीव्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग ऑफ 0.21 million units. Award is received by Shri Somesh Kumar, Principal Chief Electrical Engineer, Shri Kotesara Rao, Senior Divisional Electrical Engineer. दूसरे पुरस्कार के हकदार रहे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। इसने बचाया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग 0.12 million units. Award is received by Shri Anand Chakila, DEE, Shri S. Munni Reddy, SDEE. इसी सेक्टर में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट gets to 1 unit which is रेल संचालन भवन, DRM ऑफिस, सिकंदराबाद डिवीजन, हैदराबाद, तेलंगाना। The certificate is received by Shri Somesh Kumar, Principal Chief Electrical Engineer, and Shri N. Prasad Rao. डिस्कॉम सेक्टर की बारी आ रही है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इज रिसीव्ड बाय 1 यूनिट विच इज उत्तर गुजरात विस कंपनी लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात। द सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय श्री करमजीत सिंह रंधावा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड श्री विनोद मंगलदास श्रॉफ, चीफ इंजीनियर। Under Sector State Performance Award in Group 1, first prize goes to Karnataka State, Karnataka Renewable Energy Development Limited. The award is received by Shri J. Kumar Naik, Additional Chief Secretary, Energy, Government of Karnataka, and Shri K.P. Rudrapaya, Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited. Second prize goes to Rajasthan State, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited. The award is received by Shri N.S. Nirvan, Director, Technical, Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited, and Shri Vimal Sharma, Additional Resident Commissioner. ग्रुप 2 में फर्स्ट प्राइज गोज टू पंजाब स्टेट पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और इस अवार्ड को रिसीव करने आ रहे हैं श्री कैप सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड श्री H.S. हंसपाल, चेयरमैन, पेडा। सेकेंड प्राइज के हकदार रहे केरला स्टेट एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, और यहां से आ रहे हैं श्री राजेश कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पावर डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला, श्री सारथ कृष्णन एस, एनर्जी मैनेजर, एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, केरला।
तीसरे ग्रुप में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है असम स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने। इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं श्री नीरज वर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर, इलेक्ट्रिसिटी, होम एंड पॉलिटिकल पर्सनल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम, एंड श्री AC खटनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर असम। सेकेंड प्राइज जा रहा है उत्तराखंड स्टेट उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। पुरस्कार को रिसीव कर रहे हैं BVRC पुरुषोत्तम, सेक्रेटरी प्लानिंग, स्कूल एजुकेशन एंड रेजिडेंट कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, एंड श्री अखिलेश शर्मा, प्रोजेक्ट ऑफिसर, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रुप 4 में फर्स्ट प्राइज जा रहा है पुडुचेरी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी पुडुचेरी को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह, स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर पुडुचेरी। द्वितीय पुरस्कार जा रहा है चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रंजीत सिंह। ये है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कम हेड ऑफ स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी चंडीगढ़, एंड श्री गुरप्रीत सिंह बैंस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी चंडीगढ़। और अब बारी आती है Most Energy Efficient Appliance of the Year. In this round of awards, we have 9 appliances. और अब जा रहा है कलर टेलीविजन कैटेगरी में। Most Energy Efficient Appliance of the Year is from model number UA32T4310AKXXL Samsung India Electronics Private Limited, चेन्नई, तमिलनाडु को। अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं राजू पुलन, वाइस प्रेसिडेंट, एंड श्री डोंगमिन ली, हेड प्रोडक्ट रेगुलेशंस। वॉशिंग मशीन की कैटेगरी में जो मॉडल है वो है WT70M3000HP सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु। श्री सुनील एंटनी कुटिन्ना, सीनियर डायरेक्टर, एंड श्री संदीप सहेजवाई, जनरल मैनेजर, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। सीलिंग फैन की कैटेगरी में जो मॉडल रहा सबसे एफिशिएंट वो है एफिशिएंसिया इन नियो हॉवेल्स इंडिया लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड। श्री प्रद्युम्न पोद्दार, वाइस प्रेसिडेंट, श्री रविंद्र गंभीर, जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। तालियों को बजाते रहिए, ये आपकी शुभकामनाएं हैं। स्टोरेज टाइप वाटर हीटर कैटेगरी में जो सबसे अच्छा मॉडल अप्लायंस रहा वो है मॉडल नंबर मोन्जा DX25 हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, अलवर, राजस्थान। श्री अवनीत सिंह गंभीर, जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, श्री अमित कुमार गुप्ता, सीनियर जनरल मैनेजर, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। पंप कैटेगरी में मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस इस साल का रहा मॉडल नंबर प्लानो 10-4 CRI Pumps Private Limited, Coimbatore, Tamil Nadu. Award is received by Shri Selvaraj Ji, Joint Managing Director, and Shri Monaswamy S, Chief Executive Officer. प्लानो 104 CRI Pumps Private Limited. और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैटेगरी में मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस ऑफ द ईयर मॉडल नंबर JBKIR 25 स्टार AM, JB इंडस्ट्रीज, सोलन, हिमाचल प्रदेश। इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं श्री प्रदीप अग्रवाल, बिजनेस हेड, एंड श्री पंकज अग्रवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। LED बल्ब कैटेगरी में LED bulb category में most energy efficient appliance of the year is model number 9W self ballasted LED bulb Orient
इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश। अवार्ड को रिसीव करने के लिए पुनीत धवन, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एंड श्री संतोष अग्निहोत्री, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। एयर कंडीशनर की कैटेगरी की ओर जा रहे हैं। इसमें मॉडल नंबर 4502911 वोल्टास लिमिटेड, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से मॉडल नंबर 4502911 वोल्टास लिमिटेड। ये अवार्ड रिसीव किया जा रहा है श्री प्रदीप बख्शी, एमडी एंड सीईओ, श्री जोगेश जेटली, ऑल इंडिया सेल्स हेड। रेफ्रिजरेटर कैटेगरी के ओर हम जा रहे हैं। मॉडल नंबर HRD 1922 हेयर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र। अवार्ड इज रिसीव्ड बाय श्री NS सतीश, प्रेसिडेंट, एंड श्री पंकज चावला, वाइस प्रेसिडेंट। अभी रुक जाना, 1 मिनट रुक जाइए। अभी नहीं रुक जाइए। हम आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए जो इवैल्यूएशन किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, PCRA, EESL, NPC एंड BEE द्वारा किया गया है। मैं चाहती हूं कि वो लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और एक बार सभी लोग उनके लिए तालियां बजाएं, उनके सराहनीय प्रयासों के लिए। ये इवैल्यूएशन भी बहुत कठिन कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिस ईयर हम एक एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इनोवेशन अवार्ड शुरू कर रहे हैं। इट इज टू रिकॉग्नाइज इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज, ताकि नए नए इनोवेशंस को प्रोत्साहन मिल सके। इसमें 149 एप्लीकेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कैटेगरी इंडस्ट्रीज के तरफ अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट प्राइज मिल रहा है श्री विवेक वर्मा फॉर द प्रोजेक्ट लो टेम्परेचर इनोवेशन टेक्नोलॉजी। विवेक वर्मा को मिल रहा है ये अवार्ड। एक नया आविष्कार, नया इनोवेशन। Second prize goes to Shri Satish Kumar Dabiru for the project Recycling of Plastic in Electric Arc Finance, leveraging innovative technologies to tackle global sustainability issues. इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं श्री गजेंद्र सिंह on behalf of श्री दबीरू। इनोवेशंस के लिए भी जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई का सबब होगी। हाँ, पता है। There is one certificate of recommendation in this category which goes to Sri Ketan Goyal for the project RS Master ABS compressed air saving device for cooling applications. सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में जा रहा है श्रीमती रजनी यादव फॉर द प्रोजेक्ट स्विचिंग ऑफ ऑन लाइट्स एंड फैंस एट रेलवे स्टेशंस इन इंटीग्रेशन विद NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ट्रेन मूवमेंट डाटा।
In the category building, the first prize goes to Himalaya Institute of Alternatives, Ladakh, for the project Passive Solar Heated Building of HIAL. This category, which goes to Sri Amarjeet Singh for the project Energy Saving for a Leading QSR Chain in India. अभी जो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं वो हैं लद्दाख से फर्स्ट प्राइज, क्या नाम है? नहीं पता, तो नाम ही नहीं दिया आपने। नहीं, ठीक है। और सर्टिफिकेट के लिए इसी कैटेगरी में गोज टू श्री अमरजीत सिंह फॉर द प्रोजेक्ट एनर्जी सेविंग फॉर अ लीडिंग QSR चेन इन इंडिया। स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स की कैटेगरी में सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन विच गोज टू श्री आशुतोष तिवारी फॉर द प्रोजेक्ट हाइब्रिड ट्रेडमिल इलेक्ट्रिक स्कूटर। हम आपको बता दें कि NEEIA applications were evaluated by the experts from industry, academia and government departments। मैं निवेदन करती हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बधाई जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं। लेकिन अब पुरस्कार की जो कड़ी है वो अभी रुकने और थमने वाली नहीं है, क्योंकि और भी हमारे जो बच्चे हैं होनहार जो कि नहीं आए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने उनका बहुत खास ख्याल रखा है। तो पेंटिंग कंपटीशन जो ऑल इंडिया हुआ था उसके अब रिजल्ट्स हम बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में मंत्रालय द्वारा BEE तथा CPSUs के कोऑर्डिनेशन से पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 293 वेन्यूज में 81,502 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। हम ये भी बता दें कि हमने पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये कंपटीशन का आयोजन किया था। विषय था आजादी का अमृत महोत्सव एनर्जी एफिशिएंट इंडिया तथा आजादी का अमृत महोत्सव क्लीनर प्लैनेट।
BEE 11 CPSUs के नोडल तथा कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स के सराहनीय प्रयासों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। हम निवेदन करते हैं वो भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हम सब उनके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। 11 CPSUs जो हैं उनके नोडल ऑफिसर्स, आपके बहुत सराहनीय प्रयास रहे। और अब बारी है रिजल्ट्स की। तो कैटेगरी ए में 5th, 6th और 7th के स्टूडेंट्स ने भाग लिया एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू सागरिका सरानिया, गुवाहाटी पब्लिक स्कूल, गुवाहाटी। सेकेंड प्राइज गोज टू जिगमत चौसल, ध्रुव पद्मा कॉर्पो, लद्दाख। थर्ड प्राइज गोज टू अबीर दास मेलागर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, त्रिपुरा। और आप ये सब देख रहे हैं पेंटिंग, कैसे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स कलरफुल सी बनाई है, इंस्पायरिंग सी। 10 कंसोलेशन प्राइजेस है एक कैटेगरी में, जिसको हम फिर पढ़ना चाहेंगे। उनके नाम भी सोहम सामंता, निधि बल्लारे, रक्तिम बरुआ, सिया वर्मा, अथर्व शंखधर, दीपिका सतपति, देवांजलि रॉय, आस्था, अभिनव कुमार, पाही बरुआती। और ये रहे फर्स्ट कैटेगरी के। और कैटेगरी बी में 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तो जो पहला पुरस्कार जीता है वो है ऋषिका दास, एलीट को-एड हाई स्कूल, वेस्ट बंगाल। ये देखिए उन्होंने कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है, पेंटिंग बनाई है। सेकेंड प्राइज गोज टू सृष्टि पॉल, सेंट पॉल स्कूल, त्रिपुरा। थर्ड प्राइज गोज टू अनुराग सिंघा, एक्सेल पब्लिक स्कूल, गुवाहाटी, असम। और 10 कॉन्सोलेशन प्राइजेस की कैटेगरी बी में मैं नाम पढ़ना चाहूंगी। आदित्य चौरसिया, देवमाल्या दास, ऋतुपर्णो रॉय, एम महीधर, कोशिका सलाथिया, KS तमिलारासन, उत्कर्ष बंसल, मुफीदा शेहाबुद्दीन के, दिया रॉय चौधरी और कोयल अचरजी। तो इन सभी होनहार बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये ही देश के भावी कर्णधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने 135 करोड़ की आंखों में आकांक्षाओं के उजाले भर दिए हैं। माननीय श्री RK सिंह जी पूरी जिम्मेदारी, पूरी कर्मठता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में अपने मंत्रालय द्वारा उजालों का नया सूरज गढ़ रहे हैं। आप बड़ी लगन से सौभाग्य, उदय, उजाला योजनाओं को मूर्त रूप देकर पावर फॉर ऑल 24/7 इस परिकल्पना को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, श्री RK सिंह जी, टू काइंडली एड्रेस अस एंड गाइड अस। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। आदरणीय कृष्णपाल जी, माननीय राज्य मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, आलोक कुमार जी, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिस्टर देवांगन, द एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पावर, मिस्टर अभय भाकरे, द डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, लेडीज एंड जेंटलमैन, I'd like to begin by congratulating all the winners, all the prize winners. I would especially like to congratulate the winners of the Innovation Awards. And I would also like to thank the jury who selected the Innovation Awards and the people who came up with the idea of Innovation Awards. I saw amongst the winners many who were winning it for the second time, third time in succession. Special congratulations to you. That means you are keeping up the good work. I would like to congratulate all the children for the brilliant paintings. We'll call them sometime in March when the things ease, and we'll hand over the prizes to them in person. It will be a real pleasure. In the power sector, we have brought about a real transformation, a total transformation in the past 5 years.
And we are proud of that transformation. We've transformed our country from being part deficit to part surplus. I don't think any other country would have added about 142 gigawatts of generation capacity in this time period, in such a short time period, but we did that. And today our established capacity is 392 gigawatts, whereas our peak demand is peak demand is just about 203 gigawatts. We've connected the whole country into one grid with the capacity to transfer 112,000 megawatts from one part of the nation to another part of the nation. This has also united the whole country into one market so that you can generate power anywhere and sell to any other corner of the country. This has also led to 2 exchanges coming to operation, with more exchanges on the way, which leads to open competition and therefore lesser prices for the people. We strengthened the distribution systems by infusing about 2,02,000 crores under the Deen Dayal Gram Jyoti Yojana and the IPDS. We constructed about 2,890 new substations. We upgraded about 3,900 older substations. We added almost about 5.5 lakh circuit kilometers of HT lines, about 11 or 12 lakh circuit kilometers of LT lines, etc., etc. 5,65,000 transformers, you name it. The net result of all this has been that now we are exporting power in bulk. The availability of power, which was about 11.5 hours in rural areas in 2014, is today about 21.5 hours, 22 hours. And in the urban areas, it is 23.5 hours. We connected every village, we connected every hamlet, and we connected every home. So we brought about a transformation. Now the transformation has not only been in terms of access and capacity, it has also been in terms of the energy mix. And that is why we are here today. The transformation which we have brought about in the carbon content of our energy, and the transformation which we are bringing about, the transformation in which we are bringing about in the energy intensity of our economy and in the emissions intensity of our economy. In all these, we are emerging as a world leader. We have emerged as a world leader. We had pledged in COP21 in Paris that by 2030, 40% of our established capacity will be from non-fossil fuel sources. Now we reached that target in 2021, this year. That means 9 years in advance of our target date. No other country has reached its NDC commitments, which it made in Paris. We've done it 9 years in advance. We have reduced the emissions intensity by 28%, but this is a measurement which was taken in 2018. If you take the measurement today, I think we are very close to about 30%. And our target is a reduction of 33% by 2030. So that also we shall achieve a good 5-7 years before our target date. We've already established about 150 gigawatts of renewable energy capacity, including large hydro. We are so
when I say that we are at the forefront of energy transition, I'm not exaggerating. And this is something which has been recognized by all. And this is despite the fact that we have one of the lowest per capita emissions in the world. Not only per capita emissions. I mean, our per capita emissions are about 1/3 of the world average, mind you. World average. Not only per capita emissions. We are responsible for one of the least quantities per capita in historical emissions. In fact, even if you take it in absolute terms, we are responsible only for about 3% of the total emissions which have piled up around the world. The total global emissions till date, we are responsible for only 3%. The developed countries are responsible for more than 80%. But that does not deter us from pursuing the goal which we want to pursue. That is because of our belief in environment, a belief which is rooted in tradition, in our belief in, from times immemorial. We have been venerating trees, rivers. It's there in our blood. We venerate nature. We realize, our forefathers realized, that it is nature from which we all come and it is back to nature to which we'll all go. And so we have been venerating nature for centuries. So that is why we set hard targets for ourselves and we achieve it. We set a target, we achieved it. We'll achieve our other targets as well. We'll achieve 175 gigawatts by 2022, despite 2 years having gone down to COVID. I already have 150 gigawatts established. I have 63 gigawatts under installation. So if COVID does not intervene again, I think we should be very close to the target which we had set for ourselves. And we shall achieve 500 gigawatts by 2030. Let there be no doubt about that. And this is again despite the fact that the present plight in which the world finds itself insofar as environment is concerned, despite the fact that this climate crisis is not of our creation, but of the creation of other countries, of developed countries, despite all that. And despite the fact that we have to develop. Now that is something which must be taken note of. The developed countries have used fossil fuels and have been guzzling energy in huge quantities per capita. They're still doing it. Per capita, their per capita energy consumption is, I think, 6 times, 7 times. In one country, I won't name the country, it's 11 times the world average. That's the per capita consumption, energy consumption. It's still going on. Now, they've developed using fossil fuels. They have developed by spewing huge quantities of CO2, etc. We have to develop, but our determination is that we will develop by emitting less, and we'll develop by becoming more energy efficient, developing, but making sure that development, the energy intensity requirement, the energy intensity is less and the emissions intensity is less. That is a target which we have set for ourselves. And that is why we are here again today. We've been doing well insofar as reduction of our, as I said, overall figures, reduction of our emissions intensity. We are doing well. We are well ahead of the target. A large part of the credit for that goes to the Bureau of Energy Efficiency and to all of you. Only the second round of Perform, Achieve, Trade resulted in reduction of CO2 emissions by 66 million tons per annum. 66 million tons per annum. We've launched Ujala Gramin today. 1 million bulbs. It was launched earlier, but today we'll be achieving 1 million more bulbs in the rural areas. This is to target the rural areas. The first round was basically for urban areas. Now, even in the first round,
the reduction in CO2 emissions amounted to almost about 100 million tons of CO2 emissions reduction. That was the reduction in emissions, 120 million tons in fact, total. Only Ujala. Total about, you take PAT and you take the energy efficiency appliances program, the star ratings program, etc. That total would come to about 300 million tons of CO2 emissions reduced per annum. So Bureau of Energy Efficiency has done well, but we have large challenges ahead of us. The Prime Minister has announced a target of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity by 2030. We shall achieve it, as I said, we shall achieve it. It will require addition of storage. Now the addition of storage will push up our power costs somewhat, because to begin with, storage will be expensive. But we have embarked on that path. We've already issued bids for 1,000 megawatt hours by the Ministry of Power for its balancing requirements as a grid element. Another 1,000 megawatt hour bid has been issued by NTPC. So we've already started on that journey. And this is despite the fact that the rest of the world has not started as yet. The largest capacity, I was inquiring, the largest capacity of storage which has been set up anywhere in the world is probably in California, about 450 megawatt hours. That's all. That's all. From a world, which is giving the rest of the world lectures on climate. I mean, that's it. That's what the developed world has done till date. It's nothing. But without storage, you can't have energy transition on the scale which we want. So we are doing it. We also have a PLI for encouraging manufacturing of battery storage systems here. We also have a program for encouraging pumped hydro. We already have some pumped hydro capacity. We are going to add more pumped hydro capacity. So we are going to add to our storage capacity. And at the same time, we are going to intensify our efforts in energy efficiency, in more efficient use of energy, in reduction of emissions. One major sector which will yield results, of course, is the housing sector, which we have just started. We had already taken up commercial housing earlier. Now we have taken up residential housing. And I'm certain that if we communicate this to all the stakeholders, the architects, if we train them, the people who build houses, if we tell them about the benefits of this, the results will be huge. The results in emissions reduction will be huge. The movement towards net zero building will gather pace. Now that is our next objective. Of course, this will require strong efforts in communication, but that is necessary. Small and medium industries we've already taken up, but we have to strengthen that, because that is again where huge results will come insofar as energy efficiency is concerned and insofar as reduction of emissions is concerned. That is huge. And that again is a challenge. So we'll have to structure it in such a way that they find it easy to adopt it. Financing will have to come. So the banks will have to come forward. And the banks will have to understand that energy efficiency saves money. It yields profits. It's not only good environment, it's good economics. That is again something which we have to inform the banks about. And that is again a movement which we have to start. But we have to do this. Large industry, I find, is already adopting energy efficiency promptly. And again, another thing which I find,
is that I see this consciousness of the need to save energy actually spreading in the schools, in the colleges. Now that is again something which we need to intensify. Once we teach our children that 1 unit of energy saved means actually 1 unit of energy generated, I think once people become conscious, they'll start switching off lights. And when you start switching off lights, then the emissions come down. It's not that, we have shortage of power. No, we don't. As I said, our established capacity is much beyond our peak demand. And it's growing. Our power consumption is growing. It will grow, continue to grow. Last month, I think it went up by almost 13%. In peak demand terms. In energy terms, it went up by about 11%. So the demand will continue to grow. It will happen because we have to develop. And we are developing. Our rate of growth, our economy is growing. So our energy consumption will grow. But the decoupling has happened. I want to congratulate all the officers of the Ministry and the Bureau of Energy Efficiency. The decoupling between growth and energy consumption has already happened. We have to push it a little bit more. Energy efficiency is working. We have to just push it a little bit more. We have emerged as a world leader. We shall remain a world leader insofar as energy transition is concerned. We are coming out with large bids for green hydrogen and green ammonia. That again is one more step towards energy transition. The world which we are entering into is going to be a new world. A cleaner world, a healthier world, with no smog and no or very little fogs. I think that is what we aim at, all of us together. And I want to thank you, all the winners, for helping us take one more step towards our target of a cleaner world, a healthier world, a greener India, a healthier India, and of course, a developed India. Thank you very much. My congratulations again. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, आपकी प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए. नाउ आई कॉल अपॉन श्री अभय बाकरे, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स. Very briefly, Honorable Union Minister, sir, many thanks, and we are really grateful for your leadership, your guidance for the last 5 years, and Bureau and Ministry of Power have taken up many steps under your guidance and leadership, and we will continue to do so. And thank you so much for gracing these occasions and rewarding the exemplary work done by the industry and the establishment. परम आदरणीय माननीय राज्य मंत्री जी, आपके इस शुभ अवसर पर आने से सारे अवार्डीज और सभी संगठन के कर्मचारियों, बीई के स्टाफ को बहुत बहुत उत्साहवर्धन मिला. आपकी इस उपस्थिति से बहुत बहुत आभार. डेलीगेट्स फ्रॉम PSUs, CMDs, Ministry of Power, other government organizations, delegates from bilateral, multilateral organizations, and SDAs. We are really grateful for coming to this event today, and we are really also thankful for your continued support for Bureau's year-long activities. Our special thanks to the 5 states, their chief secretaries, energy secretaries, and also the MDs and directors of DISCOMs from the 5 states who have done their exceptional contribution in shaping up our 1 million LED instruments today. So we are really thankful for these officials from 5 states. Most important, the awardees, the participants. इतनी मुश्किलों के बावजूद, so much challenges, circumstances, all of you have participated, you have given your details, and especially the innovators who have submitted their presentation, and the jury who have done their evaluation
We are really thankful. All the awardees, congratulations. At the same time, so much thankful for gracing these occasions. Sir, as Honorable Minister has said, communication is the key because this is a demand-side initiative. ऊर्जा दक्षता एक कंज्यूमर और एक सिटीजन की ओर से एक पहल होती है, and in that regard, we are really grateful for all the media personnel present here and also for the throughout the year when you are supporting Bureau and all other energy efficiency programs at national level as well as state level. We request you to continue to do the same, and we will be really helpful in the future also if we receive a lot of support from media person. In this regard, our team from Ministry of Power, the PIB team as well as all the PIB representatives present here, we are really grateful for gracing this occasion. The EC division of Ministry of Power is always in support and leading us, and especially the additional secretary, deputy secretary and all other staff are helpful. But at the same time, in Bureau, we have a very dedicated team of officers and staff who work really hard, not only for these 7 days for this Energy Conservation Week, but also throughout the year in shaping up and implementing various policies and programs. A big thank to all the BE team here, and hope they will continue to do their hard work in the coming years. Finally, I also would like to thank the ITDC staff, the staff from Vigyan Bhavan here, and all the present here who have graced the occasion. Once again, thank you so much once for all. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार। माननीय राज्य मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार। सभी डिग्निटरीज ऑन द डेस्क का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के हमारे मित्रगण इंटरैक्शन के लिए वीआईपी लॉन्च में आप कृपया पधारें। मीडिया के हमारे मित्रगण, आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी से इंटरैक्शन के लिए कृपया वीआईपी लॉन्च में पधारें। आप सभी हाई टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। और एक चीज़ और, आप लोगों को जो अवार्ड मिला हुआ है इसके पैकेट्स हैं वो वहाँ पर काउंटर में आप जाते टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट दी पैकेट्स ऑफ द अवार्ड्स फ्रॉम द काउंटर in front of the Vigyan